myself Dr. Ankita, Assistant Professor in RPIT Medical and Technical Campus Karnal. Today I will discuss about the blood part 4. If you like my content, please like, share and subscribe my YouTube channel. Hematologic system, erythrocytes. रेड ब्लड सेल्स होते हैं इसमें. रेड ब्लड सेल्स आर biconcave discs. They have no nucleus and cytoplasmic organelles. They contain a red colored protein called hemoglobin. Their main functions is in gas transport, mainly of O2, but they also carry some CO2. Human erythrocytes are 7.5 mm in diameter, 2.6 thick at the rim of 0.8 mm thick in the center. The biconcave shape increases their surface area for gas exchange. The thinness of the central portion allows fast entry and exit of the gases. The cells are flexible, so they can squeeze through narrow capillaries. The normal concentration of erythrocytes in the blood is approximately 3.9 to 5.5 million per microliter in women and 4.1 to 6 million per microliter in men. Normal red blood cells. This is the diagram of the RBC. Normal red blood cell RBC flow for फ्रीली विद इन ब्लड वेसल्स में से RBC फ्लो करेगा. क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है ये कॉर्नर में. नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल है इसमें. नेक्स्ट है बायोकनकेव शेप ऑफ RBC. लाइफ स्पेन एंड फॉर्मेशन ऑफ red blood cells. Erythrocytes are produced in red bone marrow, in the end of long bones and in flat and irregular bones. They passes through several stages of development before entering the blood. Their lifespan in circulation is about 120 days. The process of RBC development from stem cells takes about 7 days and is called erythropoiesis. The immature cells are released into the bloodstream as reticulocytes and then mature into erythrocytes over 1 to 2 days within circulation. During this time, they lose their nucleus and therefore become incapable of division. The hormones erythropoietin and substances such as iron, folic acid and vitamins B12 are essential for the production of erythrocytes. Erythropoietin hormones is a glycoprotein hormone produced in the kidneys and stimulates the production of globin. The protein component of HBC enhances the release reticulocytes in the circulation and enhances reticulocytes maturation in to mature RBC. एर्थ्रोपोइसिस हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स है. ये ब्रस्ट होने के बाद फॉर्मिंग यूनिट अर्थ्रोइड्स. BFUE सेल्स है. कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट अर्थ्रोइड्स. CFUE अर्थ्रोब्लास्ट्स है. ये रेटिकुलोसाइट्स है. अर्थ्रोसाइट्स है. RBC. ये अर्थ्रोपोइटिन डिपेंडेंट है. ये आयरन डिपेंडेंट है. दिस डायग्राम इज द स्टेम सेल कोमेटेड सेल डेवलपमेंट पाथवे. फर्स्ट में है हेमोसाइटोब्लास्ट. सेकंड में है प्रो अर्थ्रोब्लास्ट. फिर है ये फेज़ 1 में राइबोसोम सिंथेसाइज हो रहे हैं. सेकंड है फेज़ टू में हीमोग्लोबिन एक्यूमुलेट हो रहा है. फेज़ 3 में इजेक्शन हो रहा है किसका? न्यूक्लियस का. अर्ली अर्थ्रोब्लास्ट, लेट अर्थ्रोब्लास्ट और जो थर्ड स्टेज में पहुंच रहे हैं नॉर्मोब्लास्ट से रेटिकुलोसाइट्स में और अर्थ्रोसाइट्स में.